हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजी मोबाइल। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ओप्पो का फ़ोन आया हुआ है जो कि ब्लैक पेस्टेड है और ये केस जो है वो ड्रॉप केस है, गिरा हुआ फ़ोन है। तो इसके ट्रैक्स सीपीयू के डैमेज है और ये फ़ोन टोटली डेड है। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि हार्ड डिस्क और सीपीयू को ब्लैक पेस्टेड को किस तरीके से निकालना है और कैसे रिवॉल्व करना है। सबसे पहले इसका जो पतरा है जो हमें पीपीडी पेस्ट लगा के थोड़ा हीट करके निकालना है, क्योंकि हमें इसमें ट्रैक डैमेज नहीं करना है, क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही पतला है, मीडियाटेक का बोर्ड है। इसे आराम से निकालना है, कोई घाई नहीं करनी है। 300 के टेम्परेचर पे हम इसे निकाल रहे हैं। हम क्विक 2008 इसमें एसएमडी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसका ग्लू कट कर लेना है और 250 के टेम्परेचर पे, ज़्यादा इस पर हीट नहीं देना है। 250 टेम्परेचर बहुत है इसके लिए और एयर आपको रखनी है 40 पे। इस टेम्परेचर पे बाजू के जो भी कंपोनेंट है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा। और ये वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की गई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, आधे पौने घंटे की वीडियो हो जाती थी, इसलिए हमने इसे शॉर्ट कर दिया 15 मिनट तक। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं इसके नीचे पूरा ये ट्रैक डैमेज हो चुका है क्योंकि ड्रॉप केस है। जैसे हम आईसी उठाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे कितना डैमेज है। यहाँ भी दिख रहा है इसका बोर्ड, सेकेंड लेयर दिख गई। तो यहाँ पर इसका ग्लू टोटली निकल चुका है। अब इसे सीपीयू को हम निकालेंगे। पहले हार्ड डिस्क निकालेंगे फिर सीपीयू। हार्ड डिस्क निकालने के लिए हम टेम्परेचर फिर से 300 के ऊपर रख देंगे और थोड़ा गैप बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोनेंट थोड़े बीच में आ रहे हैं, तो ये दो कंपोनेंट को भी निकालना ज़रूरी है, नहीं तो गैप नहीं मिलेगा। ड्रॉप केस में जब भी आप हार्ड डिस्क या सीपीयू निकालें तो ज़रा आराम से निकालना है, क्योंकि इसमें सेकंड लेयर भी डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे आप इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और सेम केस सीपीयू में भी वैसे ही रहेगा। इसमें भी हम आराम से हिट देंगे, बट इसमें उतना डैमेज नहीं जितना हार्ड डिस्क सेक्शन में डैमेज है। सबसे पहले इसे हम क्लीन करेंगे 183 पीपीटी डाल के। आप 138 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये कंपनी का जो पीपीटी है 217 डिग्री होता है, उसे हमें पहले चेंज करना होता है, क्योंकि इजीली बॉल्स जो है वो डैमेज ना हो। थोड़ा पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इजीली इसे रिमूव करने के लिए। इसका ब्लैक पेस्टेड जो है, इसे निकालने के लिए हम एसएमडी से ही निकालेंगे। टेम्परेचर रहेगा 250, एयर रहेगी 40। जितना भी 217 डिग्री का जो पीपीडी है उसे हमें रिप्लेस कर देना है, नहीं तो फिर क्या होगा, निकलते टाइम ट्रैक डैमेज हो जाएंगे। और ये 240 की डिग्री पे भी इजीली ये ग्लू रिमूव हो जाएगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
again.